Hello everyone, good evening. Hello all. Hello everyone, good evening. Okay, today we are going to discuss on if functions in Excel. Okay, and I will be sharing a file in the chat box. You can download this file, and we are going to work with different examples of a function, how we can apply a function. If is a logical function which is to be used whenever we have to find or test any conditions in Excel. Okay, so I'm sharing the file in the chat box. You can download it and keep it ready for use. So it's a very important function since a lot of conditions are always there which we need to test, and we need to derive a result based on those conditions. So if you know a function, then you can use it very well. If you don't know, then there are difficulties in working on with the function. So let us dwell into how to use a function. So sharing the file in the chat box, download it, keep it open for use. Okay. So once I've shared the file, I will share my screen also, and we will see how to use the if function in Excel. So let us see. I'm sharing my screen now, and on my screen you will see Excel now. Hello. Hello everyone, good evening. Okay, today we are going to discuss on if functions in Excel. Okay, and I will be sharing a file in the chat box. You can download this file, and we are going to work with different examples of a function. Okay, so this is the file that we are going to work on. You can see that there is a case study. Okay, I'm just mentioning that we are going to do a function. Let me just. So if is a function in Excel which is used whenever you have to test any condition. Whenever you have to test any condition, we will apply a function. Okay. So if is also called as a logical function because you have to have some logic, or you can say a conditional function. So we use if function whenever there is a logic or there is a condition where that needs to be checked or discussed. Okay. So let us discuss this case study. So in this example, you can see that there is a table which has employee name, salary, revenue, bonus, and performance. Okay, so bonus and column, performance column is empty. You cannot see anything in the bonus and performance column. Okay, but we have employee name, we have salary, we have revenue, and here we have a case study. So let me read it out to you. So if revenue is above or equal to 20,000, if the revenue is above or equal to 20,000, then the bonus should be what? 10% of salary. So the bonus should be 10% of salary. Otherwise, bonus will be no bonus. So this is what we are expected to do. Okay, so I just bolded. So if the revenue is more than or equal to 20,000, then
the bonus should be 10% of salary. So what should be done? The bonus should be what? 10% of salary, else there will be no bonus. So we need to test this condition. So whenever we have to test any condition, we have to use what? If function. Okay. Now, how to apply the if function? Let us see how to apply the if function. So tell me, whenever you have to write any formula in Excel, what it should be preceded by? Okay, you can reply in the chat box or in the comment section how to write a function, start a function in Excel. How do you start a function in Excel? By putting a equals to sign, isn't it? So we'll put a equals to sign and we can start the if function. Yes, if is the condition, is the formula. So equals to sign we have to use. Perfect. And then let me just zoom in the screen so that you can see well. And now we will apply this if functions is equal to if. We'll open the bracket and now you see there are three conditions to it. There are three parameters, or whenever you open the bracket, whatever you see is a parenthesis. Okay, so in this parenthesis you will see that there are three options which are being asked. Okay, one is logical test, second one is value of true, and the third one is value of false. Okay, so we need to check. We need to put first the logical test, then define what if the test is satisfied, the condition is met, then what should be the outcome, and if the condition is not met, then what should be the outcome. Okay, so logical test. Now what is the logical test here? Logical test is revenue is above or equal to 20,000. Now tell me which column has revenue. Okay, which column has revenue? Answer in the chat box which column has revenue. Column number A, B, C, D, E. Which column has revenue? And which is the first cell that is the first revenue amount? Okay, tell me the cell number which has the first revenue amount. So we have got the answer, and the answer is E9. Very good. Answer is E9. So E9 is the revenue. E9 is the revenue. So we want to check whether this revenue is greater than or equal to 20,000. So we have to define the logical test if E9 is greater than or equals to what? 20,000. Then what we are supposed to do? We are supposed to give a bonus equals to 10% of the salary. So we'll have to calculate 10% of salary. Now, how do I put it? 10% of salary. Which column has salary? Tell me the cell address which has the first salary. Tell me the cell address which has salary. Come on. Which cell has the salary? D9. Very good, Rahul. D9. So D9 has salary. Okay, so if E9 is greater than is equal to 20,000, then D9, that is salary, should be multiplied by what? Salary should be multiplied by what to calculate the bonus. So bonus will be 10% of salary. Salary is D9. Now what should I write? What should I do now? Multiply by 10%. Multiply by 10%. So the condition is if revenue is more than or equal to 20,000, then the salary should be multiplied by 10%. The salary should be multiplied by 10% to calculate the bonus. And if this condition is not matched, if this condition is not fulfilled, then what should happen? If the condition is not fulfilled, then what should happen? Come on, tell me. If the condition is not fulfilled, then what should happen? Then what should be the amount of bonus? What should be the amount of bonus? Answer in the chat box. What should be the bonus? If the salary or the revenue is not more than 20,000, then what should be the bonus? Come on, what should be the bonus? I'm waiting for an answer. If the salary, if the revenue is less than 20,000, then what should be given as a bonus to the employee? What percentage of salary should be given to the as a bonus to the employee?
What should be given as a bonus to the employee? Read the condition. It says that there will be no bonus. Okay, so there will be no bonus if the salary is less than, if the revenue is less than 20,000, then there should be no bonus. Then there should be no bonus. So no bonus means what? Zero. No bonus simply means what? Zero. So I can put a zero, or even I can write down no bonus. Even I can write down no bonus. Is it fine? So what we are trying to do is we are trying to test that the salary, the revenue, if it is more than 20,000, then give bonus which is equal to 10% of salary. If the revenue is less than 20,000, then give no bonus. Let us press enter and see what do we get as a result. So one thing you have to remember that you cannot put a comma in a number in Excel. So we'll have to remove this comma. So 20,000, if E9 is greater than is equal to 20,000, then bonus should be 10%, salary should be multiplied by 10%, else there will be no bonus. So let us press enter. And what do we get in the first cell? What do we get in the first cell? What do we get in the first cell? We get 3,500 as an answer. We get 3,500 as an answer. Why? Because here the salary, the revenues was more than 20,000. The revenue was more than 20,000. And since the revenue is more than 20,000, we had calculated 10% of salary, which is 3,500. Now, I want to check this condition for all the cases. I want to test the condition for all the cases. Now, what will I do? I will simply press shift and down arrow. I will simply press shift and down arrow and see what shortcut key I am pressing to copy the formula. I want to copy the formula down. I want to copy the formula down. So what I'm doing now, I'm pressing Control D. I'm pressing Control D. Now, when I press Control D is a shortcut to copy your formula down. Okay, Control D is a shortcut to copy your formula in the next cell. Okay, this is Control and D. So we check that if the salary is more than 20,000, then the bonus is 10%. So in the first three cases, the salary is in fact more than 20,000. But in the fourth case, you see that the revenue is not more than 20,000. It is 14,239, which is less than 20,000. So there is no bonus. Okay. Now let me try and put something else in the first row. So let me convert this to 18,000. So if I do 18,000, what should be the answer in the first case? Tell me. If I do 18,000, what should be the answer? If I do 18,000 and the revenue, what should be the answer in the bonus? Come on, I want an answer from everyone. I want an answer from everyone. What should be the answer if I put revenue as 18,000? What should be the bonus? The bonus would be 0, no bonus, because it is mentioned that if the revenue is less than 20,000, then don't pay any bonus. Don't give any bonus. Then don't give any bonus. That is perfect. Okay. Have you understood this? Have you understood this? So if we have understood this, now what we have to do is we have to go to the next situation. We have to go to the next case study. Okay. Go to the next. Read the next line. So it says that if revenue is below 15,000, if revenue is below 50,000, if revenue is below 15,000, then performance should be a sad face, otherwise a smiley face. Okay, so we want to put some smileys, some emojis over here, and what I want is I want a sad emoji. Now, how to insert an emoji into Excel? That is another case. Okay, so Windows and dot. When you press window and dot, you get emojis. Okay, so I want to
have a sad face, sad smiley when there is no bonus, and otherwise there should be a happy smiley, okay, a smiling face when there is a bonus. Okay, so how do we do this into Excel? Okay, so we will see that how we can do that. So we want a sad face when there is no bonus and a smiling face when there is a bonus. So if the revenue is less than 15,000, revenue is less than 15,000. So this is a logical test. This is something that we want to test now. And based on this, either the face should be sad or it should be a smiling face. It should be a smiling face. So now let me write a formula over here. So equals to if, again we'll start with if function, open the bracket, and now what do you want to check? We want to check revenue. Now which cell has revenue? Which cell has revenue? The same cell, which is cell number E9. 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 Now I want to check for less than. If the revenue is below 15,000, so I have to use less than sign, and then I will put 15,000. If the revenue is less than 15,000, then what? Then give me a sad smiley because there will be no bonus. Then give me a sad smiley. Now, how do I insert a smiley? So we can select the cell first. Either you can insert a smiley using a window and dot over here, window and dot, and you can put a smiley into inverted commas and a happy face, again windows and dot, a happy face in inverted commas, and close the bracket and say enter. Now you get, in the first case, what do you get? We get a smiling face. Why? Because the revenue is more than 15,000. Okay, now I drag this formula down, Control D, will copy all the formulas down. So here I get a sad face. Here I get a sad face, and what we can do is we can color them. We can put some colors. So let us put some colors. Alt HFC, font color. Alt HFC, and let me put some yellow color into smileys. Okay, so let me make it yellow or maybe orange, and we'll put a background color also as black so we can see them. Okay, so you can see that all the three are happy, and this one is sad because there is no bonus, and here also there is no bonus. Okay, here the revenue is less than 15,000. Let me make it 11,000. So now here also we have got a sad face. So there are two sad faces and rest are smiling faces. Okay, have you all understood this? Have you all understood this? Yes, sir. Yes, great. So if you have understood this, then we can go to the next problem. Okay, so come to exercise number 2. Come to exercise number 2. Now see, now this is, here there are more than one condition. So first we had seen that there was a single condition. Now you will see that there are multiple conditions over here. Then there are multiple conditions. Okay, so now we will look for multiple conditions. Okay, so if there are multiple conditions, we will have to, can we use if in there if there are multiple conditions? The question is, No. no, we cannot use if when there are multiple conditions, for the single reason that if syntax, if formula allows you to put only what? One logical test. If functions allows you to put only what? One logical test. Can you see that if logical test, value if true and value if false? So that means we can only put one condition. We can only test one condition over here. So if there are more than one condition, then what we are supposed to do? What we are supposed to do if there are more condition? We can use Ifs. yes. So there are two options. There are two options. So I'll write down more than one condition to be tested.
So whenever there is more than one condition to be tested, in that case, what is to be done? If there are more than one condition to be tested, then we have two options. Option number one, to use nested ifs. Nested if. So what is nested if? What is nested if? If inside if. Okay. So we will see that how to use nested if. And second option number two is to use another formula of if, which is IFS. Okay. So whenever there are multiple conditions, use if instead of what? If. Okay. So let us use both the conditions. First, we will use nested if. Okay. So let me just highlight them with different colors. So this is first option. This is second option, and both these options to be used when there are more than one condition to be tested. Okay. So the problem is we have name, customer name, zone, gender, children, yes or no, age, and meeting status. And what they are saying is if the customer is male, okay. So what I'll do is I will write down the conditions over here. Okay, I will write down the conditions over here. So let me just increase this column size. We will write the conditions over here. Okay, so condition number one. Let me increase the font size. Yes, what is condition number one? Can you read, Bhavita? Customer is male. Right, customer is equals to male. That is condition number one. What is condition number two? Age between 40 and 50 years. Age should be between. So greater than what? 40. And we can write down less than what? Then 50. 50. So we can write something like this. Age should be less than 50 and more than 40. That is condition number two. Is there any other condition also? Yes, there is one more. Children is no. Children is no. There should be no children. If all the three conditions are satisfied, 1, 2, 3, if all the conditions are satisfied, all conditions are met. If all the three conditions are met, then what should be the result? Then invite for meeting. Invited. We can say invited for meeting. So now this is the case study. This is what we are supposed to do. Okay, we are going to solve this now. So this is condition number one. This is condition number two. And this is condition number three. All the three conditions, if they are satisfied, then invited for meeting. Okay, so I cannot use if, because if can be used only when there is a single condition. So if there are multiple conditions, then what we can do is we can use one more function which is called as AND, and we can use a function called as what? A function and function. Okay, so we will use and. So what is the use of and function? I will not use nested if, but instead of nested if, I will use and function. So if you write down and function, it says that checks whether all the arguments are true and returns true if arguments are true. Okay, so let me show you first and function, how to use an and function. So is equals to, I will write down and over here. Okay, now it is saying logical one. So the condition one, we need to check the first logical condition. Now what is the first condition? Customer is equal to
Male. Male. Okay. Now, where is customer? Which cell has customer values? B5. B5 to B12. D5. D5. Okay. So if D5 is equals to what? Male. For male, I will use M. But M, I have to put in what? Inverted commas. Always remember, whenever you are testing any text, we have to put in inverted commas. So when we are checking if and this D5, that is gender, is equal to male or not. What is the second condition? Age. Age should be between 40 and 50. So first we will check whether age is in which column? F5, cell F5. So we will check if F5 is first greater than 50, greater than 40, and one more, F5 less than 50. Correct? It should be more than 40 and less than 50. So I've 50. written it 2 times. Now, what is the third condition I need to check? Children should be no. Now, which cell has children? Which cell has children? This one, E5. So E5 is equals to what? It should be yes or no? Yes. Yes. No. Yes. No, no. No. Children no hai na? Yes ka. So children are Yes. okay. So now we are testing for these 3 conditions. Number 1, the customer should be male. His age should be 40, between 40 and 50, and the children should be no. If all the 3 conditions are satisfied, That is it. then the answer should be true. Then the answer would be true. So let us press enter. And first answer we are getting as false. Now tell me why we are getting false. Which condition is not matched over here? Which condition is not matched over here? Why we are getting a false? Tell me. Because customer is the children. Because the customer children is yes. He gender is male. Age is between 40 and 50. So these 2 conditions are met. But the third condition, children is no, is not met. Okay, so because of this condition, the answer is false. Now let us copy paste this formula in the remaining cells. Control D. Now second one is also false because the same result, because of the same parameters. Okay, let me put F over here. Then also it will not change because it is female. Okay, if I say children no, if I make children no, then what will happen? What should happen if the children is no? Then what should True. happen? True. Status will be true. It should change to true now, but is not. Why it is not changing? But the gender is female. Gender is F will be there. F will be there in case of them. we have to convert this to male. Now, if it is male and there are no children and the age is also 40 to 50, then the result is true. Okay. So you will see that wherever the result is true, all the 3 conditions are satisfied. Can you see that? दिख रहा है आपको कि जहां पे भी Yes, 3 sir. कंडीशन सेटिस्फाई हुई है वहां पे सब जगह क्या आ गया? ट्रू आ गया और बाकी सब जगह क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है. False. बट हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए. हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए. हमें ये चाहिए कि भैया मीटिंग में बुलाना है या नहीं बुलाना है. तो किन लोगों को नहीं बुलाना है मीटिंग में? Children जो है जो फॉल्स है, जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई false है. नहीं बुलाना है, और जो ट्रू है उनको बुलाना है. तो हम क्या इस फंक्शन को इफ के अंदर लगा सकते हैं? अब कैन आई पुट दिस इनसाइड इफ? सो if I will put this inside if. ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट लग देंगे. ये लॉजिकल टेस्ट है, ये चेक करो भैया. अगर चेक करने के बाद इसका आंसर ट्रू में आता है, इसका आंसर ट्रू आता है, तो बोलेंगे इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड. और अगर फॉल्स में आता है तो क्या लिखेंगे? सॉरी, यू आर नॉट इनवाइटेड. Are you getting it? Now let us see if it is working or not. First one, what is the result for the first one? You are not invited.
You are not invited. Second one, you are invited. Third one, invited. Not invited. Fourth one is invited, and the last person is invited. So customer number 8 is invited, customer 4 is invited, number 2 is invited. So how did we use if here? We used if. There are more than one condition, then also I could use if, because I use what along with And it? I use and. Okay. Now I am changing this case study. Have you all understood this? ये समझ में आया आप सबको? yes, sir. एक बार और समझना है या इट्स डन? समझ में आ गया अच्छे से? सर एक बार समझ वापस में आ आया। रही एक बार और बता देते हैं, चलिए लेट मी शो दिस अगेन। वापस से करते हैं एक बार फिर से और देखते हैं हमें क्या करना है। हमें 3 कंडीशन चेक करनी है और तीनों कंडीशन के ट्रू होने पे एक रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट ये आना चाहिए कि अगर तीनों कंडीशन ट्रू होती है तो पर्सन को बुलाना है मीटिंग में, अदरवाइज इसको नहीं बुलाना है। ठीक है, अब एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं इफ फंक्शन के साथ में, लेकिन एंड फंक्शन बोलता है कि आप कोई भी कंडीशंस ले आओ, कितनी भी ले आओ, हम सब चेक करके बता देंगे। लेकिन आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे ट्रू और फॉल्स। तो हमने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप चेक करिए, आंसर ट्रू दीजिएगा। लेकिन हमने इफ को कहा कि भैया जब आंसर ट्रू आए ना तो आप ट्रू की जगह वो आंसर दीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि इफ क्या करता है? इफ तो ये बोलता है कि कंडीशन मैच हो रही है नहीं हो रही। तो अगर एंड का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा तो आप जो बोलेंगे हम बोले आएंगे, और अगर एंड का रिजल्ट फॉल्स आएगा तो आप जो बोलेंगे हम बोले आएंगे। ठीक है, तो हम इफ से स्टार्ट करते हैं, लाइन से चलते हैं। इफ में सबसे पहला होता है लॉजिकल टेस्ट। इफ में क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट। अब मुझे ये बताइए, एक लॉजिकल टेस्ट है या एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट है? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट है। एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट अगर है, अगर एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट है तो क्या मैं इफ फंक्शन के अंदर लिख सकता हूं उसको? नहीं लिख सकते ना। अगर एक से ज्यादा लॉजिकल नहीं। टेस्ट है तो हम इफ फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो अगर नहीं लिख सकते हैं तो लिखने के लिए फिर भी लिखना है तो क्या करेंगे? एंड लगाएंगे। And एंड लगाएंगे और एंड के साथ में एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही क्या करेंगे? हम पहला कंडीशन लिखना चालू करेंगे। तो पहला कंडीशन ये था कि भैया चेक करिए कि मेल है या नहीं है। तो ये मेल वाला कॉलम सिलेक्ट करा, सेल सिलेक्ट करा और लिख दिया इज इक्वल्स टू मेल, और वो भी किसके अंदर? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever you are putting a text to check the condition, it should always be in inverted commas। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम क्या करना है? दूसरा कंडीशन लिखेंगे। चिल्ड्रन चेक करने हैं कि है या नहीं है। मतलब चिल्ड्रन शुड बी नो, होने नहीं चाहिए। नो चिल्ड्रन शुड बी देयर। ओके, बच्चे वाले को नहीं बुला रहे हैं हम। ठीक है, तो नो। तो सेकंड कंडीशन होगी कि चिल्ड्रन को टेस्ट करो कि नो होने चाहिए। एंड तीसरा कंडीशन है कि एज शुड बी बिटवीन 40 and 50, चिल्ड्रन आर इन E5, तो E5 लेना है। ठीक है, चलिए अब एज चेक करना है। एज 45 से 45 आ रही है, तो 40 और 50 के बीच में है या नहीं है। तो एज आ रही है हमारी F5 में, तो F5 इज ग्रेटर देन 40, कॉमा F5 इज लेस देन 50। अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि 40 और 50 को भी इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे? 40 और 50 को भी इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे? अगर आपने ग्रेटर देन लिया है, अच्छा चलिए पहले इसको ग्रेटर देन ही रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा नहीं हुआ अभी फॉर्मूला, हमने सिर्फ लॉजिकल टेस्ट लगाया। अभी लॉजिकल टेस्ट लगाया, कॉमा लगाते हैं। अब ये बोल रहा है अगर ये कंडीशन मैच हो जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं, बुला दीजिए, निमंत्रण भेज दीजिए उनको, और क्या करेंगे? इनवाइटेड। और नहीं मैच हो तो बोल दीजिए नहीं आएंगे, नहीं आना है आपको, नॉट इनवाइटेड। तो आ गया नॉट इनवाइटेड। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी की एज एग्जैक्ट 40 है तो क्या हो रहा है देखिए, तो भी नहीं बुलाया जा रहा उसको। और अगर किसी की एज 50 है, भाई मेल है, नो है, लेकिन एज क्या हो गई? 50 हो गई, तो भी नहीं बुलाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि 40-50 वालों को भी बुलाया जाए, तो क्या चेंज करना पड़ेगा ये मैं पूछ रहा हूँ फॉर्म में। सिंबल चेंज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू।
हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल चेंज करेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल कौन सा होता है एक साथ लगाने के लिए? जब हम लिखते हैं तब तो हम ग्रेटर देन के अंदर एक और बार लगाते, एक और लाइन लगाते, स्लैश। बट यहाँ कैसे लिखूं मैं इन एक्सेल? हाउ टू राइट इन एक्सेल? Simply puts a equals to sign, nothing else. Simply put an equals to sign and see the result. एक मिनट। सर लेकिन यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो वो 40 आएगा ना, और या 50 दिखता है, एक मिनट, बिटवीन देम तो नहीं आएगा ना। just a minute. You will have to put this into also inverted commas. ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है ना, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। यू विल गेट द आंसर। हमें 40 और 50 वालों को भी बुलाना है, इसलिए हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा रहे हैं। सी देखो 50 वाला इनवाइटेड हो गया, इनवाइटेड हो गया 50 वाला। 40 वाला क्यों इनवाइट हुआ? क्योंकि चिल्ड्रन में क्या आ रहा था? यस, चिल्ड्रन को नो कर दिए। अब क्या हो गया? इनवाइट हो गया। आर यू गेटिंग इट? यस। Yes. So all those persons where all the three conditions are matching, all the three conditions are satisfied, are invited to the party. So the seventh customer is not invited because the other children is yes. क्या कह रहे हैं? क्या समझा दीजिए। Seventh customer में अगर children वहाँ पे no होगा, सेवेंथ कस्टमर में क्या होना चाहिए? children no होगा वहाँ पे। अगर हम नो no क्यों करेंगे होगा? तब नो क्यों होगा? ये तो डेटा हमें दे रखा है ना, ये तो ऑलरेडी डेटा दे रखा है। सर अगर नो कर देंगे तो इनवाइट कर देगा वो। यहाँ पे लिखा होता है यस। हमारी जो कंडीशन है वो 40 और 50 दोनों को भी एज को दोनों इनवाइट करना है। कोई बात। दोनों हाँ क्या? हाँ, एक सेकंड वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो जो दोनों एज है हमारी 40 और 50 दोनों एज के ग्रुप को इनवाइट करना है ना। हाँ करना तो है। सेवन कस्टमर की एज 40 है। हाँ है। फिर वो नॉट इनवाइटेड कंडीशन लिख के आ रही है। वो नॉट इनवाइटेड इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि एज तो 40 है, जेंडर मेल है, लेकिन चिल्ड्रन क्या है? यस चिल्ड्रन क्या है? यस चिल्ड्रन क्या होने चाहिए थे? नो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर इसको चिल्ड्रन को नो कर देंगे तब इनवाइट करके आएगा। हाँ, चिल्ड्रन को अगर नो कर देंगे तो इनवाइटेड आ जाएगा, देख लीजिए करके। इफ यू डू चिल्ड्रन नो, यू विल गेट द आंसर इनवाइटेड। यस, आ रहा है? यस समझ में आया? यस चलिए, सो वी कैन यूज एंड फंक्शन अलॉन्ग विथ इफ। नाउ लेट मी डू वन मोर थिंग। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं नीचे, और अब मैं एक चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, एक नई चीज और सीखेंगे आज हम। ठीक है, आई एम गोइंग टू चेंज दिस केस स्टडी, और मैं बोलता हूँ कि if any of the following conditions are satisfied, ठीक है, then यहां से कॉपी कर लेते हैं, मीटिंग स्टेटस shall be invited else not। ठीक है, अब देखिए ये बोल दिया गया है। ठीक है, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर लाइन ओवर हियर। और अब कंडीशंस क्या है सर? कंडीशन तो दिखा दीजिए, दिखा देते हैं। ये है कंडीशंस। Okay, so if any of the following conditions are satisfied,
satisfied, then meeting in status will be invited, otherwise not invited. Okay, so what are the conditions? Conditions are customer is male, age between 14-50 and children is no. अब मैंने क्या करा, any of the following, इस पे ध्यान देना, any of the following conditions. तो अगर any है तो कैन आई यूज एंड? अगर any है तो कैन आई यूज एंड? बताइए, नो सर, यस और नो? नो सर। यस सर, मल्टीपल कंडीशंस है। एंड का मतलब मैंने क्या समझाया था? एंड A and B साथ are partners in the firm. A and B are partners in a firm. दोनों है या एक है पार्टनर? दोनों है। A और B can do a business, can do a partnership with C. तो A या B दोनों को करनी है, A या B में से कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। तो अब जब मैंने any of the following बोल दिया है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी रिजल्ट आ जाएगा, या सारी की सारी होना जरूरी है? कोई भी होगा। कोई भी हो। तो कोई भी हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? और पक्का? यस। अच्छा, आप किसी मेहमान के घर जाते हैं तो वो पूछता है आपसे, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? यही पूछते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी एंड कॉफी? और पूछते हैं। आप क्या बोलते हैं? यस, ब्रिंग अस बोथ। दोनों ले आओ, पहले चाय पी लेंगे फिर कॉफी पी लेंगे, और कोल्ड ड्रिंक हो तो वो भी ले आना फिर। आया समझ में? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सो वील हैव टू यूज व्हाट? और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है, जब आपको कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है, तो फिर आप काम में लेते हैं और। क्या काम में लेते हैं? और। हाँ, एंड नहीं और। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो इस पूरे फॉर्मूले में क्या चेंज होगा बताओ? कंडीशंस वो की वही है, क्या चेंज करूं एंड के बताओ? बदले और लिख देंगे। बस दैट इज इट, एंड के बदले और लिख देते हैं। और अब देखिएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ओहो, सभी आ गए हैं, ये तो सभी इनवाइट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक ना एक कंडीशन तो फुलफिल होनी ही है, होनी ही है। अच्छा, कभी ऐसा होगा क्या कि तीनों में से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही? वो कब हो सकता है बताइए, कब हो सकता है? मान लीजिए मेल को हमने कर दिया फीमेल, ठीक है, और चिल्ड्रन को कर दिया यस, और एज को कर दिया 60, तो क्या होगा? तो फिर क्या होना चाहिए? नॉट इनवाइटेड। नॉट इनवाइटेड। तो क्यों नहीं हो रहा है इनवाइट? इनवाइट हो रहा है अभी भी ये। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना यहाँ पर। हमने कहा कि या तो मेल होना चाहिए जेंडर, या फिर चिल्ड्रन नो होने चाहिए, और एज जो है वो 40 से ज्यादा 50 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर भी कैसे इनवाइटेड हो गया है बताइए? ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी नो, तो यहाँ पे यस कर देते हैं, चिल्ड्रन यस है और ये फीमेल है, एज 10 ईयर्स ही है, तो नॉट इनवाइटेड आना चाहिए था ना। लेट्स चेक इफ और, मतलब कोई एक चेक चेक करेगा। चलो एक काम करते हैं, और मैंने आपको समझाया नहीं ना, पहले और समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और। ठीक है, इसको हटाते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और। सो लेट अस टाइप और पहला टेस्ट में ले रहा हूँ कि क्या ये मेल है, क्या ये मेल है। दूसरा टेस्ट ले रहा हूँ, क्या चिल्ड्रन नो है। और तीसरा टेस्ट ले रहा हूँ, क्या एज एज ग्रेटर देन 40 है, कॉमा, या फिर एज लेस देन 50 है, और क्लोज कर रहे हैं।
यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए। ट्रू आ रहा है आंसर। क्यों आ रहा है ट्रू? समझ नहीं आ रहा ट्रू क्यों आ रहा है ये। क्योंकि ना तो जेंडर मेल है, ना चिल्ड्रन में नो है, ना एज 40 और 50 के बीच में है। ग्रेटर देन 20, लेस देन 50। Why I'm getting a true? I should not get a true. There is some गड़बड़ over here because see, in case हम कुछ भी लिख रहे हैं तो भी आंसर ट्रू ही आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। Let me सर convert this to, ब्लैंक में भी ट्रू आ रहा है। हाँ सर ब्लैंक में भी तो ट्रू आ रहा है। हाँ ब्लैंक में भी टू आ रहा है तो नहीं आना चाहिए। इसको एंड करते हैं। एंड में देखिए फॉल्स आ रहा है, एंड में फॉल्स आ रहा है क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ मेल, यहाँ लिखता हूँ नो, और यहाँ लिखता हूँ 35, यहाँ लिखता हूँ 45। अब ट्रू हो गया। तो एंड इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, बट और में कुछ गड़बड़ है। अब इसको चेंज करते हैं, इसको फीमेल कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 65। फॉल्स होना चाहिए था। ओके, नाउ लेट मी शो यू। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू और, ठीक है, और हम लिख देते हैं F36 इज इक्वल्स टू 1, कॉमा G36 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो यहाँ पे 1 लिखा हो या 0 लिखा हो तो फिर ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, यहाँ लिखता हूँ 20, फॉल्स आ रहा है ना। तो दिस मीन्स दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, दिस इज वर्किंग प्रॉपरली। इट इज नॉट 1, इट इज नॉट 0। इफ आई पुट 0 ओवर हियर तो ट्रू हो गया, या 1 लिखूंगा तो भी हो जाएगा। यहाँ पे 100 कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ, अब फॉल्स आना चाहिए। तो इट इज वर्किंग प्रॉपरली, और फंक्शन तो सही काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहा? एनीवेज, बट यू कैन डू। ओके, बट okay, now let us try this with, so we have got or condition satisfied over here। यहाँ पे हमने मेल चेक किया था और यहाँ नो किया था, यहाँ पर हम ले आए ग्रेटर देन। इसको एक ही कंडीशन रखते हैं कि इट शुड बी मोर देन 40। नाउ सी, अगेन इट इज गेटिंग ट्रू। False आना चाहिए। For some reason it is giving wrong answers, but it should be false. Okay, so whenever you have to test any one condition, then also you can use and or operator। ठीक है, so we will stop here for the day because it was a 1 hour session which I wanted to show। तो if function हमने देखा, if में how you can test a single condition, how you can put a emoji। to insert a emoji, the shortcut key is window plus dot, window and this dot। Okay, and secondly, whenever you have to test multiple conditions, then you can use and। Tomorrow we will see that how to use nested if and ifs ifs function। Okay, so that is all for today। I'll see you tomorrow at the same time, or maybe I will inform what time I'm coming, and accordingly we'll have the session। Any questions, anyone? Rahul and Babita? So can we have a recorded session as well? Recorded. हाँ? So recorded session आज की जो क्लास हुई उसका
recording session is good. हाँ, see this one I had put on YouTube also, so it will be there on my channel. मैं उसका link share कर दूंगा, आपको मिल जाएगा. And previous classes I'll provide you. Okay. चलिए, I have one more session at 9:30, so I'll have to quit this, and you also can join. 9:30 we are discussing on how to become a data analyst, what is the roadmap and what all you need to do. So I will share the link in the group. You can all continue join. Okay, चलिए.